हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कम बैक टू द चैनल एंड वी आर स्टार्ट विद द न्यू सेशन दैट इज फाइनल अकाउंट विद द फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेड बिजनेस, ए सिंगल ओनर बिजनेस, उनका फाइनल अकाउंट हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे और इसी फाइनल अकाउंट में हम लोग व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स और उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, राइट। तो इसी चर्चे को आगे लेते हुए चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनल अकाउंट, राइट। तो फाइनल अकाउंट का तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट तैयार कैसे करेंगे, राइट। तो mainly the final account consist of two types of a statement. One is the income statement, जिससे हमको बिजनेस का इनकम की पता चलता है, राइट। एंड सेकेंड वन इज द पोजीशन स्टेटमेंट। मतलब पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, द फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, तो आर्थिक हालत बिजनेस का क्या है, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट से वेदर द बिजनेस आर रनिंग इन द प्रॉफिट और सफरिंग इन द लॉसेस, तो ये इनकम स्टेटमेंट से हम लोग को पता चलेगा। और पोजीशन स्टेटमेंट से पूरे बिजनेस की हालत क्या है, तो फिनेंशियल स्टेटस बिजनेस का क्या है, इससे हमको पता चलता है किससे, न पोजीशन स्टेटमेंट से, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एंड बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स either gross profit or a gross loss, and the profit and loss account reveals disclose net profit or net loss, right. Trading account reveals either a gross profit or a gross loss, and the profit and loss account reveals either net profit or a net loss, right. And the balance sheet reveals the financial position, that is asset and liability position. Asset का मतलब what it owns and liability means what it owes, right. In accounting we are recording each and every transaction from day to day on the day to day basis in the 365 days or in the accounting period, right. And the owner and a sole trader who running their business, they must wish to know about the financial position of the concern, right. These transactions which are recorded in the books of a journal, it is posted to the respective ledger accounts, right, and taken to the trial balance to check the arithmetical accuracy of the books of accounts, right. Once the arithmetical accuracy being verified, then it is the time for the trader to know about their achievement with the help of final account. And the trader from that time onwards, they want to know at the end of the year what is the achievement. तो जब साल की शुरुआत था, दिन था, तो अभी साल का अंत में और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम में, तो बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस कैसे चल रहा है, राइट। तो इस बात को हम समझेंगे फाइनल अकाउंट के मदद से। तो फाइनल अकाउंट यहां पर मदद साबित होगा कि कैसे एक ट्रेडर और एक सोल ट्रेडर और ओनर का बिजनेस का तो आर्थिक हालत हम कैसे पता चल कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, राइट। एंड ये ट्रेडिंग कंसर्न, their objective is what? There is the two type of a concern. One is the trading concern. That whenever I am telling to you that a trading concern, that means they are dealing with the तैयार हुआ माल से वो क्या करता है, डील करता है, मतलब रेडीमेड सामान से,
right? And the manufacturing concern at that concern, who are purchasing the raw material for the purpose of converting it into the finished goods. In the manufacturing concern, they purchase the raw material for the purpose of converting the raw material into finished goods. That's why that concern are preparing the manufacturing account or production account, right? And in the trading concern, they are only and only deal with the ready-made सामान, right? तैयार हुआ है माल से वो क्या करता है, डील करता है, right? So as a trader, a trading concern purchases goods with a view to selling purpose, with a view to sell it at a profit, right? And they are preparing the final account, right? तो इसी चर्चे को आगे लेते हुए बच्चों हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो और एक बात भी मैं छोड़ गया हूं, और एक बात भी मैं आपको बताता हूं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हमको क्या मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से हम लोगों को क्या होगा, तो दो बातें यहां पर हो सकता है, जरूर भी होगा। क्या? फाइनल अकाउंट हेल्प्स टू, these are prepared to know the net result of the business with the help of an income statement. We are able to determine the net result of the business, right? And also it prepares the final account for the purpose of determining the financial position of the concern. Determining the financial position. Mainly these are two prime objective of the preparing the final account. Then final account, then the income statement are helps to determine the net result of the business by taking the consideration of a trading account and a profit and loss account. And the financial position, with the help of the position statement, we are able to determine the financial position, right? देन फर्स्ट कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट prepared by the trader about the purchases of goods and selling them into the profit. The records in the trading account they records the purchases of goods and sale of the goods, right? And the trading account, it is the first part of the income statement. बच्चों यहां पर आपको याद रखना है, it is the first part of the income statement, because the income statement are divided into two parts. The trading account is the first part of the income statement, right? And in the number 2, it is nominal account in nature. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, बिकॉज इट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? एंड इन द थर्ड, it reveals by it disclose either gross profit or gross loss. It reveals either gross profit or gross loss. And in the 4, the difference between the net sales and the cost of goods sold. The difference between the net sales
and the cost of goods sold is either gross profit or a gross loss. The difference between the net sales and the cost of goods sold is either gross profit or a gross loss, right? तो यहां पर चार बात आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट ना ट्रेडिंग अकाउंट is that account which are prepared by the trader to make the record about the purchases of goods and selling of goods. It is nothing. And the trading account is the first part of the income statement, and it is nominal account in nature, and it reveals gross profit and gross loss, and the fourth main net sales. The difference between the difference between net sales and the cost of goods sold is either gross profit or a gross loss, right? So how to determine the net sales? How to determine the net sales? Now net sales equals to cash sale and credit sale, cash sale and credit sale less sales return, less sales return, that is net sales. Cash sale and credit sale equals to total sales less sales return, that is net sale, right? And how the cost of goods sold is determined? Pause the video, note it down. The difference between the net sales and the cost of goods sold is either a gross profit or a gross loss, right? तो पहले मैं आपको समझाया हूं कि नेट सेल क्या है. नेट सेल इज व्हाट ना कैश सेल और क्रेडिट सेल लेस सेल्स रिटर्न इज नेट सेल, right? And in the second aspect, how the cost of goods sold is determined, right? How the cost of goods sold is determined, बच्चों. तो cost of goods sold determined, तो cost of goods sold शॉर्ट में COGS, cost of goods sold equals to opening stock, opening stock add purchases, less purchase return outward, add direct expenses, less closing stock, or cost of goods sold, right? Opening stock add purchase less return add direct expenses less closing stock is cost of goods sold. Opening stock add purchases less purchase return add direct expenses less closing stock, that is cost of goods sold. बच्चों मैं यहाँ पर आपको बोलने के लिए चाहता हूँ cost of goods sold means the cost which is incurred for the goods, the cost which is incurred for the goods in order to bring them into sellable condition, right? In order to bring them into sellable condition, that is cost of goods sold. The cost which is incurred for the goods, सामान को तैयार करने के लिए जो पैसा हम लोग लगाते हैं, that is cost of goods sold, right? सामान को बेचने के लिए जब तैयार होगा तो बेच पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सामान को तैयार करके बेचने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं, that is called cost of goods sold, right?
उस तैयार हुआ है माल को बेचने के बाद जो मिलता है, जो असूल होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेट सेल्स, राइट? उसको हम बोलते हैं नेट सेल्स, राइट? हियर वी आर इन्वेस्टिंग एंड इन द नेट सेल्स वी आर गेटिंग, एंड द डिफरेंस अमाउंट इज, अगर ये मार्कर का कॉस्ट, अगर ये मार्कर का कॉस्ट 30 रुपीज है, अगर इस मार्कर को हम मार्केट में बेचेंगे 30 रुपीज में, तो इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर हुआ 10 रुपए, राइट? अगर 30 अगर 30 रुपीज के अगर 30 रुपीज से लेस हम लोग बिकेंगे तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा, राइट? तो सामान को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर द गुड्स, सामान को तैयार करके बेचने के लिए जो पैसा हम लोग लगाते हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बेचने के बाद जो पैसा हम लोग को मिला है उसका नाम है नेट सेल्स, राइट? द डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल्स, व्हेन द नेट सेल्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, that represents gross profit. When the net sales is less than the cost of goods sold, that represents a gross loss, right? That represents the gross loss. Okay, and the cost of goods sold, the difference between the net sales and the cost of goods sold is either gross profit or a gross loss, right? So how the net sale we are determining? Cash sale and credit sale equal total sale less sales return, that is return inward, that is नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बच्चों मैं यहाँ पर आपको समझाया हूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। The difference between the net sales and the cost of goods sold, that is gross profit, and the difference between the cost of goods sold and net sales, that is gross loss, right? Pause the video, note it down. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट आर द स्पेसिमेन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये है डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, लेस परचेजेस रिटर्न बाय रिटर्न आउटवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, right? To direct expenses like wages, carriage inward, freight, octroi, right? ये सब बच्चों हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? And in the credit side we are recording by sales, both cash sale and credit sale by sales and by closing stock, right? And by closing stock, and the difference between the debit side and the credit side is represents either, if the shortage side is the debit side, so it represents to gross profit. If the credit side is the shortage, it represents by gross loss. This is the balancing figure. Either a gross profit or a gross loss, right?
This is all about the format of the specimen of the trading account. We are to recording to in the debit side to opening stock, right, and to purchases at the beginning of the year stock था कितना, और इसी साल ड्यूरिंग द ईयर हम सामान खरीदे इतना, तो कुल मिलाकर हमारे पास टोटल फिनिश्ड गुड्स ऑफ मटेरियल कितना है, राइट। और उसके ऊपर भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करवाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विथ द परचेज ऑफ अ गुड्स, the expenses which are incurred in connection with the purchases of goods, right, wages paid on the loading and unloading to the workers up to the godown, right। मैं जहां पर बिजनेस करता हूं वहां तक सामान लाने के लिए जो खर्चा होता है तो उसको हम कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहुंचने के बाद जो अमाउंट हम यहां पर खर्चे करते हैं तो उसको हम कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड इन कनेक्शन विथ द परचेजेस ऑफ गुड्स, द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड इन कनेक्शन विथ द परचेजेस ऑफ गुड्स इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, the expenses which are incurred in connection with the processing of the goods, purchase of the materials, purchase of the raw materials, process of production, जो खर्चा होता है उसका नाम हम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद यहां पर जो होता है सेल्स से इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पार्ट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की पार्ट को हम माइनस करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड क्लोजिंग स्टॉक हियर इज वन ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस। बस इतना। बहुत मजेदार भी होने वाला है और इस कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप लोग को समझ में आएगी। तो यहां पर हम वेजेस देते हैं बच्चों, अगर हम वेजेस देते हैं, वेजेस पेड टू द वर्कर्स, राइट, वेजेस पेड टू द वर्कर्स, अगर वो वेजेस लिखा है तो वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज नोइंग एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा है वो भी चलेगा, वेजेस एंड सैलरीज एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी हम लोग लिखेंगे। अगर वो सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है तो इसका मतलब वो सैलरीज एंड वेजेस क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये वहां पर सैलरी contributes maximum amount and the wages are the less amount, are not a considerable amount, that's why we are recording in the indirect expenses, right। एंड कैरेज इनवर्ड, सामान को लाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। फ्रेट ऑक्ट्राई, ये सब हमारे के लिए क्या होता है, कभी कभी हम इंपोर्ट ड्यूटी भी हम देते हैं। जब सामान हम बाहर से लाते हैं तो उसके लिए हमको इंपोर्ट ड्यूटी देने के लिए पड़ता है, और उसके साथ भी हम लोग सामान जो बाहर से आता है तो कहां पर भी वो पोर्ट के अंदर जब भी रहता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर डॉक चार्जेस देते हैं, राइट। तो there is also the dock charges amount also constitute the part of the direct expenses and recorded in the debit side of the trading account, right। Tal wages, carriage inward, freight, octroi, tal these are the expenses which are normally recorded in the direct expenses, right। तो प्रोडक्शन का खर्चा हो, फैक्ट्री में खर्चा हो, राइट, ये सब खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम देते हैं बच्चों, राइट। तो अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर पूरे चर्चा रखेंगे और इसके साथ इसका प्रॉब्लम भी होगा हम उसको आगे भी सॉल्व आउट करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इफ एनी डाउट
please ask me in the comment section. And all the best to my all the 12th students which are appearing the 12th board exam, and all the best wishes and all the best. Thank you.